Now I will solve problem number 1.243. भाइयों, it's associated with a figure and let me draw the figure. And this is that the light thread with a body of mass m tied to its end is wound on a uniform solid cylinder of mass m and radius r. Related to axis passing through it, at the moment t equal to 0, the system is set into motion. It starts. Assuming friction in axle of the cylinder to be negligible, find the time dependence, the angular velocity of the cylinder and the kinetic energy of the whole system. Now, first of all, I'll draw the free body diagram. मैं दो free body diagram बनाऊंगा. एक तो इस सिलेंडर के लिए mass m, radius r, and another free body diagram would be for this mass. Now, if this mass is moving down with constant acceleration a, the cylinder would rotate with constant angular acceleration which is equal to alpha and which is equal to a by r. Now, I will write two equations. मैं पहले इस सिलेंडर के लिए लिखूंगा T into R. This is the torque about this point is equal to I into alpha. T into R is for I will write half mr square and for alpha I will write a by r, or T is equal to I will write m a by 2. This is for this cylinder, and then for this block there is tension T, mg, and it's accelerating in downward direction with acceleration a. So mg minus t is equal to ma. In order to solve, I will add the two equations and I will get mg is equal to m by 2 plus a small m into a, or acceleration is equal to mg upon a small m plus capital M by 2. This is acceleration and its constant angular acceleration is m g upon a small m plus capital M by 2 into r. This would give me the acceleration, and angular velocity is alpha into time. So this is mgt by a small m plus capital M by 2 into r. This is the acceleration, constant acceleration, constant angular acceleration, and this angular velocity variation with time. Now, they asked what is kinetic energy of the system as a function of time. मैं दो तरीके से कर सकता हूं. मैं velocity भी लिख सकता हूं as at mgt upon small m plus capital M by 2. अब मैं काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दो तरीके से लिखूंगा. एक तरीका तो होगा, मैं कहता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एक तो यह फंडा लगा सकता हूं, मैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं. इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आ रहा है, इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा h इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर
H is equal to mg t square by small m plus capital M by 2, and change in potential energy is mg into H, or change in potential energy is m square g square into t square by small m plus capital M by 2. This is decrease in potential energy, and the same would be increase in kinetic energy. This would be m square g square t square plus upon this is increase in kinetic energy of the system. एक तो यह मेथड हो सकता है काइनेटिक एनर्जी विद टाइम लिखने का, दूसरा एक और मेथड हो सकता है काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. सो आई कैन ऑल्सो राइट काइनेटिक एनर्जी एज हाफ आई की जगह मैं लिखूंगा 1/2 capital mr square into this omega square plus half small m into this v square. And once again on solving I'll end up with the same result. इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा. अब ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन रखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद द सेम आंसर. आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, this is a better method, definitely. Please note it down. Now I will solve problem number 1.244. Let's read the problem statement. The end of thin threads tightly wound on axle of radius r of Maxwell disk are attached to a horizontal bar. When the disk unwinds, the bar is raised to keep the disk at same height. The mass of disk with the axle is equal to m, and the moment of inertia of arrangement related to axis is I. Find the tension in each thread and the acceleration of the bar. Now, the Maxwell disk, this is a Maxwell disk. इस तरह की यह एक सर्कुलर डिस्क है और दोनों तरफ इस तरह से and a thread is wounded on it like this, like this. This is a Maxwell disk, and there is a bar here, like this. If we see its elevation from here, यह मैक्सवेल डिस्क है और उसके बीच में यह थ्रेड है और यह वह बार है.
like this. Once again, let me read the problem statement. The end of thin thread tightly wound on axle of radius r. This are the axle and they are having the radius r. Attached to horizontal bar. This is horizontal bar. When disc unwind, the disc unwind like this. This disc unwind like this. The bar is raised. This bar is raised to keep disc at same height. यह जो डिस्क है यह बिल्कुल भी इस तरह से यह अनवाइंड करेगी. This would unwind and this is raised to keep it at the same height. The mass of disc with axle is equal to m. This mass is m. This mass is m. And the moment of inertia related to axis is I. इसका moment of inertia I है. Find the tension in each thread and acceleration of the bar. Now let us say tension in each thread is T. So if I see this free body diagram, मैं इस फ्री बॉडी डायग्राम को जब देखूंगा तो इन दोनों थ्रेड में टेंशन मुझे 2T दिखेगा और इधर यह 2T with some acceleration A. I'll say its gravitational force mg would act vertically downward like this. And the Maxwell disk remains stationary. Maxwell disk is, it neither descend nor elevate, is unaccelerated. ये unaccelerated it means 2T must be equal to mg. It means T must be equal to mg by 2. हम यह लिख सकेंगे. Beside it, it rotates. यह रोटेट करेगी. Its angular acceleration is alpha. mg की वजह से कोई टॉर्क नहीं होएगा. 2T की वजह से टॉर्क होएगा. 2T into r. This would provide the torque, and this is equal to I alpha. This is equal to I alpha, and I will write for 2T I will write mg into r is equal to I alpha. So alpha is equal to mgr upon I, and in order to keep it stationary, what must be the acceleration of bar? This acceleration of bar is a, and this acceleration a must be equal to alpha into r. So this acceleration a must be equal to mg r square upon I. This is answer to second part and this is answer to first part. Here what do you need to learn is the Maxwell disk. यह Maxwell disk कैसी दिखती है. मैं एक और बात दिखा देता हूं. This is Maxwell disk. इस तरह से Maxwell disk दिखती है. यह हॉरिजॉन्टल बार, और इसके ऊपर थ्रेड इस तरीके से वाइंडेड है. इस तरह से थ्रेड इसके ऊपर वाइंडेड है. This is the look and feel of Maxwell disk. इसके सेक्शन को ऐसे देखेंगे तो इस तरह से देखेगा. मैक्सवेल डिस्क को ना नीचे जाने दिया जा रहा है ना ऊपर, और ऊपर इस बार को उठाया जा रहा है. मैक्सवेल डिस्क के एक एक थ्रेड, ये जो थ्रेड बने हुए इन पर टी टेंशन है, तो दोनों थ्रेड पर मिलाकर 2T टेंशन हुआ इधर, और वही 2T मैंने दिखाया.
और नीचे की तरफ mg, 2t मस्ट बी इक्वल टू mg, तभी वह स्टेशनरी रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। और इस 2t की वजह से वह रोटेट भी होता जाएगा। 2t की वजह से टॉर्क और उसकी वजह से एंगुलर एक्सीलरेशन और उसकी वजह से एक्सीलरेशन। ये थ्रेड जितना अनवाइंड होएगा, जिस एंगुलर एक्सीलरेशन से अनवाइंड होएगा, उसी हिसाब से इसको ऊपर उठाना होगा। तो यह इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए। दिस इज आंसर, प्लीज नोट इट डाउन।